Hello guys, how are you all tonight? How is your preparation going and everything? So we will wait for a while obviously so that other people also join in and then we will begin. The topic for today is how to tackle legal reasoning in CLAT 2021. Okay? Good evening, Macy. How is your preparation going? Okay. We'll wait for one more minute and then we'll begin, okay? Till then, if you guys have some other queries or anything, we'll answer that. Okay. So we'll begin how to tackle legal reasoning in CLAT 2021. Now, one of the biggest questions that many people have, also one of the questions which is a little bit scary for some people, and one of the most important question also because CLAT is all about law. So legal reasoning is one of the most important topics, right? All right. Hi, Payal. Good evening. Good evening. So yes, beginning with this. First, we'll tell you how we will go about it. Before that, obviously, we have a flat 40% discount on all our courses. And this has been extended till 15th of July. So guys, please just go and grab this offer. All right. Moving on. How will we tackle legal reasoning? So how will we go about in today's class is, first we will discuss how different is it from the previous year papers. All right. Secondly, we will go on how to tackle stress. Again, I know 12 days remaining, guys. Countdown has begun already. So obviously, many of you might be stressed. So we will deal with how to tackle stress. After that, we will deal a little bit about the scoring strategy. And then we will do previous year question analysis. Why previous year question analysis? Obviously, to know कि कैसा question आएगा 2021 में भी, है ना? Or the best way is to just analyze the previous year question. Why? क्योंकि they know the best. They are going to set the paper again, right? The CLAT consortium people. So that's why we will analyze, rather than analyzing any mocks, we will be analyzing previous year questions. All right. Good evening, Amit. Good evening, Anurag. How is everything going with you guys? How is the preparation going? Hopefully it's going good. My voice is clear to you guys, right? There's no breaking or anything. Please, somebody send me a confirmation. Good evening, Kostuk. Just somebody confirm that my voice is clear and the board is clear and everything is working fine. Okay, Anurag, thank you. So we will begin with this. Again, last 12 days, guys, you guys are scared and everything, I know. So we are here to help you with it. This, we will talk about how to tackle legal reasoning, but at the same time, consider it as a doubt clearing session as well. Be as interactive as you can and just ask all your doubts, clear all your doubts that is regarding the CLAT 2021 exam, so that when you go into the exam hall, you're not scared because of these small little things that might be bugging your mind. You'll be very much focused and confident, and that you only have to go and attempt the question, right? So let's move on. And guys, please be as interactive as you can. Now, first of all, let's talk about how different is it from the previous year papers. Now, previous year papers में क्या होता था?
एक प्रिंसिपल और नीचे एक फैक्ट एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। उसमें क्या होता था कि आपको बस पढ़ना है और फिर आंसर करना है। एवरी क्वेश्चन वाज इंडिविजुअल, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अभी क्या है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, समझने में थोड़ा भी गलती हुआ तो 5 मार्क्स गए, है ना। तो दैट हैज चेंज्ड। अगेन क्या हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया है। तो इफ यू आस्क मी, आई विल टेल यू कि आप लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग विच इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन तीनों को आप एक साथ प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्टली द क्वेश्चंस आर सिमिलर, है कि नहीं। द क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर। हाय त्रिशा, हाय प्रेमांशु। द क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एंड लॉजिकल, या फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग बोलिए, क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ऑल ऑफ देम रिक्वायर व्हाट, योर लॉजिक, ठीक है। अभी आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को लॉ का उतना नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज तो एवरीबडी हैज ऑब्वियसली, बिकॉज इंडियन सिटीजन्स, बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए एंड दे आर एक्सपेक्टिंग जस्ट द बेसिक नॉलेज। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप लोग लॉयर ऑलरेडी हैं, आपको लॉ के बारे में हर कुछ पता है, नहीं। तो आपको ऑब्वियसली आपके पास पहले से नॉलेज होगी, आपने पढ़ा हुआ होगा सब कुछ, बट एट द सेम टाइम वो बस आपको एक्सपेक्ट करें कि आप लोग लॉजिक लगा करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इवन दो लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा लीगल चीजों पे बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा ग्रामेटिकल और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंडिंग लेवल पे बात कर रहे हैं। जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें कुछ एजम्पशन और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बट एज अ होल दे आर वेरी मच सिमिलर। तो अभी इस टाइम पे, बिकॉज जस्ट 12 डेज रिमेन, तो आई विल टेल यू कि तीनों को आप एक साथ में प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। एक साथ आप तीनों को प्रिपेयर कीजिए और जब आपको लगे कि अब कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा, बोर हो रहे हैं, then move on to QT, solve a little bit of quantitative techniques, your mind will be refreshed a little bit and then come back to legal reasoning or English or logical, ठीक है। Again, hello Ronak, hello Rohit, and so how different is it कि पहले क्या था कि आपको प्रिंसिपल स्पेसिफाई कर दिया गया, ये प्रिंसिपल है, ये फैक्ट है, इसी प्रिंसिपल से ये फैक्ट को आप सॉल्व करके आपको आंसर टिक करना है। अभी क्या है, अभी आपको मिल जाएगा एक पैसेज। अब उस पैसेज में से, हेलो कुमार अभिनव, सो उस पैसेज में से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वेयर इज द प्रिंसिपल, वेयर इज द फैक्ट, ठीक है। एंड फ्रॉम द पैसेज देयर विल बी 5 क्वेश्चंस। तो पहले आपको पैसेज में से प्रिंसिपल्स को ढूंढ लेना है एंड उसके बाद फिर आपको उसको वो चारों पांचों फैक्ट्स पे अप्लाई करके वो चारों पांचों क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो इतना ही डिफरेंस है। व्हाट यू हैव टू डू, आप ये मत करिए कि हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं जो 2020 के पहले के उसका हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा बेसिक क्लैरिटी चाहिए तो आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अभी भी प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड ही हैं। बस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या हो गया कि आपको उस पैसेज में से उसको कॉम्प्रिहेंड करके लॉजिक लगा करके प्रिंसिपल को ढूंढना है, फिर फैक्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विथ हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। द एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी को जो टेस्ट करने का जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट बस ऐड किया गया है। ऑलराइट, हेलो राशि, गुड इवनिंग guys, you can put forward your questions and I hope everybody understood this point very clearly. So we will be moving forward. How to tackle stress, one of the biggest thing that you guys might be facing right now, because again 12 days. Why am I stressing on this point, 12 days? क्योंकि गाइज अगर आप लोगों का भी डर नहीं लग रहा है तो डर लगना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इतना भी डर नहीं कि पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है, पर वो हल्का सा डर जो आपको पढ़ाई करने पे मजबूर करे कि नहीं भाई अब 10 दिन बचे हैं, बस अब थोड़ा पढ़ लो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सो हाउ टू टैकल स्ट्रेस, अगेन हाउ टू टैकल स्ट्रेस, फर्स्ट थिंग, it is okay to feel stress, take a breath and you got this, you can do it. First thing, believe in yourself guys, ठीक है। एग्जाम हॉल में कौन बैठेगा, आप बैठेंगे, साथ में कौन रहेगा, आप रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा। तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि भाई हम एग्जाम में जाएंगे और हम एग्जाम में जितना हमने पढ़ा है अच्छे से हम करके आएंगे, क्लियर करके आएंगे एग्जाम। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगेन एवरी टाइम
अगर आपको डर लगना जैसे शुरू होता है कि अरे यार 10 दिन बचे हैं, उसका उपाय क्या है? किताब खोल लीजिए, बैठ जाइए, पढ़ने लग जाइए, ठीक है? उससे आपको ये तो होगा ना कि भैया पढ़ रहे हैं, तो जो डर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि अब हाँ प्रिपरेशन चल रही है। ये मत कीजिए कि आप डर भी रहे हैं और सोचे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, अब सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, वैसा कुछ नहीं। जैसी आपको लग रहा है वैसी स्टार्ट स्टडिंग हार्ड। स्टडी हार्ड इन द सेंस इज start, just study, okay? Every time just keep on studying. And another thing is meditate. What is meditation? Not that whole thing बैठ गए हैं 1 घंटे, वैसा नहीं. Meditation is also just sitting on a chair and just breathing without any external thoughts. कुछ भी thoughts आ रहे उन्हें आने दीजिए, बस 4-5 मिनट के लिए शांति से बस बैठ जाइए, ठीक है? और अपने आप को बस बताइए, कोई बात नहीं, सब होने वाला, आपसे ही क्लियर होने वाला है, ठीक है? You can do it. So just meditate a little bit and tackle your stress, okay? If that doesn't work, listen to some calming music. If that also doesn't work, just message us. We will motivate you. We are available every time, ठीक है? आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको जो भी बाकी जो भी जरूरत है, we are there for you, okay? Taking some doubts, how to increase the accuracy. Okay, Rashi, we will deal with that, how to increase the accuracy. But at one, matlab if in one line I will just tell you, to increase the accuracy, practice more and analyze more. Practice करने से क्या होगा? आपको ज्यादा questions दिखेंगे. Analyze करने से क्या होगा कि जो आपने गलती की है वो सुधर जाएगा आपका गलती, right? तो आपको क्या करना है कि you have to just practice and analyze, ठीक है? That will increase your accuracy. There's no short way. The short way is मेहनत, not hard work, smart work. But again, मेहनत तो है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. वो है कि बस आप मॉक्स ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए. उससे क्या होगा ना कि आप ज्यादा क्वेश्चन से आप अवगत हो जाएंगे, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन आप देख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया रहेगा उसके बारे में, तो यू विल बी मोर in a position to just take the right answer because you have seen the question before as well, है ना? और थोड़ा सा questions आप मतलब GK, I hope you guys are reading GK and if not at least a few editorials daily. 1 या 2 editorials आप पढ़िए. ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब पढ़ाई छोड़ के editorials पढ़ने लग जाइए, बट अगर आप फ्री बैठे हुए हैं, सुन लिया आपने editorial या पढ़ लिया, उससे क्या होगा कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा. क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली वो करंट अफेयर्स, मैगजीन, इन सब से वो उन्होंने क्वेश्चन उठाया है. तो इफ यू हैव रेड दैट थिंग बिफोर, आपका काम आसान हो गया ना. क्योंकि अगर आपको कुछ फेमिलियर है आप किसी चीज से, आपको किसी चीज के बारे में हल्का सा ही पता है, तो उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है? आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ट्राई टू बी एज मच knowledgeable, try to gather as much information as you can. Ultimately that will help you a lot. Yes, the key to success is practice, okay? So moving on, but do try to meditate, guys. Tackle stress. Again, coming to the scoring strategy. The scoring strategy for legal reasoning. First thing first, read the question carefully, okay? Read the question very carefully. Why am I saying that? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये रीड है, अगर मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, तो एट फर्स्ट ग्लांस मेनी पीपल विल रीड इट एज READ, रीड. दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से विद दिस वर्ड, ठीक है? और इस चीज को उन्हें पता है कि कोई हड़बड़ी में पढ़ रहा है ना, तो वो कुछ की पॉइंट मिस कर जाए, ठीक है? दैट इज द माइंडसेट दैट दे हैव. तो ट्राई टू रीड केयरफुली, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको छोटा सा पॉइंट मिस हो गया ना, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. तो ट्राई टू रीड केयरफुली एटलीस्ट once or twice and focus on the keywords. Now keyword is a very general word. What do I mean by keyword is that there are a certain keywords like and or, ठीक है? and means दोनों चीजें, or means ये या ये. तो ये सब चीजें आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे लिखा रहेगा कि अगर if like in the next question that we will deal, you will see there as well, अगर and लिखा हुआ है मतलब कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, और लिखा हुआ है तो एक भी कंडीशन फुलफिल होगा तो it will be correct, right?
So try to focus on these keywords, and because it is offline, pen and paper based, हाथ में आपके पेन या पेंसिल रहेगा, आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे जो भी कीवर्ड है, ताकि फिर आपको इजी पड़े. All right. Good evening, Abhishek. So try to do that. Try to read the question very carefully. But at the same time, I'm not saying carefully मतलब कि आप 4-5 बार 10 बार क्वेश्चन ही पढ़े जा रहे हैं. ठीक है, that will be just a waste of time. Carefully means अगर आप एक बार ही पढ़े तो थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िए, या फिर अगर आप 2 बार पढ़ पाए तो और भी अच्छा है आपके लिए. अगेन फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड और तो स्पेसिफिकली आप देखिए, नोटिस करिए. फिर कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें 3-4 प्रिंसिपल्स दिए होंगे, एक ही पैसेज में 3-4 प्रिंसिपल्स होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें एक ही प्रिंसिपल होगा. तो मेक अ पॉइंट टू नोटिस दैट एज वेल. ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरलाइन द प्रिंसिपल. ठीक है, इससे क्या होगा, आपने बस एक नजर आपने बस स्किम किया उसको कि क्या प्रिंसिपल कहाँ आपको लग रहा है, दिख रहा है, उसको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि फिर जब दोबारा देखने जाएंगे आप उस क्वेश्चन उस पैसेज को, तो आपको दूर से ही दिख गया हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो आप सीधे वहीं जाए. आप फिर से ढूंढ नहीं रहे कि अरे मैंने प्रिंसिपल अभी देखा था, कहाँ चला गया. ठीक है, तो प्लीज अंडरलाइन द प्रिंसिपल. द बेस्ट थिंग अबाउट ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड इज दैट यू कैन मार्क इट. ऑनलाइन होता आप मार्क नहीं कर पाते, आपको बार बार ढूंढना पड़ता. ऑफलाइन में द बेस्ट थिंग इज कि आप उसको पेंसिल से आप मार्क कर लेंगे, हाँ यहाँ पे है, एंड देन दैट विल बी इजियर टू रिकॉल. ढूंढने में आसानी होगा. देन अगेन break down the principles in smaller parts, because obviously the principle will have 2-3 main ingredients. ठीक है, कि अगर जैसे theft, I hope you guys know about theft. So theft में क्या होना चाहिए, the object should be moved out of somebody's possession, somebody who is not you, but it should also be moved dishonestly. The intention should be dishonest. तो आपका दोस्त आया, आपका दोस्त आपका किताब लेके चला गया, राइट? तो क्या आप उसको बोलेंगे कि तुमने मेरा किताब चोरी कर लिया? नहीं, राइट? क्यों नहीं बोलेंगे ये? क्योंकि उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था. तो इसमें थेफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, मूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन एंड डिसऑनेस्टली, है ना? अब ये होता वहां पे किसी चीज में, तो और में ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन हो जाता, है ना? बट यहाँ पे एंड है, तो फिर दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. तो उस तरह से आपको ये सब जो बेसिक चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी. अगेन बिगेस्ट थिंग, डोंट यूज योर प्रीवियस नॉलेज. व्हाई एम आई सेइंग दैट? ये नहीं कह रही कि अभी तक आपने इतना सारा लीगल आपने टॉट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, क्रिमिनल भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि वो सब वेस्ट हो गया. वेस्ट तो नहीं होगा. अभी आपने जो भी पढ़ा है बाद में भी आपको काम वही देगा. फर्स्ट ईयर में तो वेरी मच, राइट? आफ्टर यू गेट इनटू NNLU. So but don't use your previous knowledge. Why I'm saying that? Because the person जो CLAT का क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करे कि आपको प्रीवियस नॉलेज होगा. ठीक है, सो डोंट थिंक लाइक अ लॉयर, थिंक लाइक अ पर्सन. आपको बस कॉम्प्रिहेंड करना, अपना लॉजिक लगा के आंसर पे आना है आपको. व्हाई एम आई सेइंग दिस इज कभी कभी क्या करते हैं ना वो लोग, थोड़ा ट्रिकी चीज अपनाते हैं टू मेक द लेवल द प्लेइंग फील्ड लेवल, यू नो, टू जस्ट लेवल द प्लेइंग फील्ड. व्हाट दे डू इज वो थोड़ा सा प्रिंसिपल को थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे प्रिंसिपल. ठीक है, जो एंड और है वो हटा देंगे, या फिर कुछ भी छोटा सा मिनिमल चेंज कर देंगे. उससे क्या होगा, आप अगर अपना पुराना नॉलेज लगा करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि अरे हाँ ये तो मुझे पता है, मैं सीधे फैक्ट पे जाकर के आई जस्ट टिक द आंसर, उसमें क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो प्रिंसिपल बदल दिया है. अब जरूरी नहीं है कि जो रियल वर्ल्ड में प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल वो देंगे. दे कैन जस्ट इमेजिन एनी प्रिंसिपल दैट दे वांट, ओके, एंड देन दे कैन गिव इट टू यू. So try to not use the real world का जो भी आपको जो प्रीवियस नॉलेज आप उसको ट्राई करिए मत यूज करने का. एट द सेम टाइम ये नहीं कह रही कॉमन सेंस मत लगाइए, अपना लॉजिक मत लगाइए. कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक होती हैं, राइट? कि अगर उसने मुझे चाटा मार दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे, फ्रेंड छोड़ो, आपने कुछ ऐसी कुछ मजाक मस्ती कर रहे हैं, आपके पेरेंट ने आपको ऐसी मार दिया, आपकी मम्मी ने बोला ये क्या कर रहे हो, चाटा लगा दिया, तो आप जाके केस तो नहीं करेंगे, राइट? और अगर आप केस करेंगे भी तो भी जज आपकी बात सुनेगा ही नहीं, बिकॉज लॉ डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ट्रिफल्स. जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर ये सब हर बात को आप कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो फिर कोर्ट के पास तो भाई केसेस का भरमार हो जाएगा. अभी भरमार है, उसके ऊपर से और, राइट? तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इस पर लॉ ध्यान नहीं देता है. ये सबको पता होना चाहिए. आई होप एवरीबडी नोज दिस, राइट? मई बाबा मारेंगे तो फिर जज भी बोलेगा कोई बात नहीं, वी कैन नॉट हेल्प यू.
I hope everybody knows this. Anyways, so what I mean is, don't use the previous knowledge, but use your logic. Use your logic, but at the same time, जो भी principle, जो भी question में दिया है, आप उसी से ही deal कीजिए. ठीक है? Guys, everybody is understanding, right? What I mean to say? Any doubts still here? Please ask in the comment section. All right? So don't use the previous knowledge. Moving on. Good evening, Sarabjit. Now, what we will do is, we will deal with a previous year question. इसको we will deal with it and I will tell you कि इसको कैसे हम लोग solve करें. ठीक है? Just to give you an insight that how should you solve. This is my way. You can, if you have an easier way, please go ahead and do it. But this is my way. If you like it, then you can solve it in this manner, and I hope this will help you. Okay? All right. Moving on with the question. So this is the passage that is given. What we will do it, at first we will just look at the keywords. First thing is principle of natural justice. Okay? Derived from the word just natural of the Roman law, and it is closely related to common law and moral principles. But it is not codified. Okay? It is a law of nature which is not derived from any statute or constitution. It is a law of nature जो कि किसी भी statute या constitution से derive नहीं किया गया है. Okay? The principle of natural justice is adhered to by all the citizens of civilized state with supreme importance. Natural justice simply means to make sensible and reasonable decision-making procedure on a particular issue. Sometimes it doesn't matter what is the reasonable decision, but in the end, what matters is the procedure and who all are engaged in taking the reasonable decision. It is not restricted within the concept of fairness. Okay? Not restricted within the concept of fairness. It has different colors and shades which vary from the context. Basically, natural justice consists of 3 rules. तो इसने बोल दिया 3 rules consist करते हैं natural justice में. यहाँ पे क्या दिया? First one, hearing rule. See, another thing you notice is it is already given in inverted commas. So it makes your job easier. कि जहाँ भी inverted commas दिख रहा है, आप वहाँ पे बस एक नजर वहाँ पे आप जाइए और underline कर लीजिए. ठीक है? First one is hearing rule. Hearing rule क्या कहता है? States that a person or party who is affected by the decision made by the panel of expert members should be given a fair opportunity to express his point of view to defend himself. ठीक है? Secondly, bias rule generally expresses that panel of experts should be free from bias while taking the decision. The decision should be given in a free and fair manner which can fulfill the rule of natural justice. And thirdly, reasoned decision, which states that order, decision or judgment of the court given by the presiding authorities with a valid and reasonable ground. Okay? So, इसमें क्या है? If you guys want me to explain, I will tell you that the first is the hearing rule. Okay? Hearing rule मतलब कि जिसके खिलाफ भी आप केस कर रहे हैं, उसको मौका मिलना चाहिए अपने बात को सामने रखने का. ठीक है? जो भी मुजरिम है, आप उसको बिना उसकी बात सुने आप उसको जेल में मत डालिए. This is the principle of natural justice. ठीक है? जैसा होना चाहिए. फर्स्ट इज द हियरिंग रूल कि जो भी गलती किया है उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए. ऑलराइट? सेकंड थिंग इज बायस रूल. बायस रूल, व्हाट इज बायस रूल? बायस रूल इज कि whoever is the judge should not be biased. ठीक है? Like if I have committed some mistake and the judge is my father, he would obviously be biased towards me, right? Because कोई भी अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी गलत तो वो देगा नहीं. क्या बोलते हैं? गलत डिसीजन तो देगा नहीं अपने बच्चे के खिलाफ. तो द जज वुड बी बायस्ड, राइट? सो बायस रूल इज कि जो पर्सन है वो न्यूट्रल होना चाहिए. ठीक है? या फिर किसी ने जज को ब्राइब कर दिया है, अगेन द जज इज नॉट बायस्ड, राइट? सॉरी, द जज इज बायस्ड बिकॉज जिसको ब्राइब किया उसको वो ज्यादा फेवर करेगा. सो the second rule is biased rule. Biased rule, the judge should not be biased. Okay? And then the third is reasoned decision. Reasoned decision मतलब कि बस arbitrary नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे मन किया तो मैंने डिसीजन दे दिया क्योंकि मेरा मन था. ऐसा मन नहीं, आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपने इस रीजन की वजह से
आपने ये जजमेंट दिया है, ये डिसीजन दिया है, ठीक है. तो these are the three principles of natural justice. All right. So these are the three principles. I think these are the three principles which would be applied in the question. So we will move on with that. But first, let's finish this. So the principle of natural justice have been adopted and followed by the judiciary to protect public rights against the arbitrary decision by the administrative authority. One can easily see that the rule of natural justice include the concept of fairness. They stay alive and support to safeguard the fair dealing. All right. So three principles, तीनों को underline कर लिया हमने. Hearing rule, bias rule, and reasoned decision. Moving on to the questions. Let's see the question. So the question is nemo judex in causa sua. Okay. So this is the principle that no one can be a judge in his own case. Relates to which of the following rule of the natural justice. So अभी तक मैंने जो भी explain किया है उसके हिसाब से आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. Come on guys, answer this. No one can be a judge in his own cause. Relates to which of the following rule of natural justice. मैंने आपको 3 rules बताए, right? Bias rule, reasoned decision rule, hearing rule, or all of the above. Okay, very good. Mayank, Sarabjit, Rohit, and Mansi may say very good. The answer should be bias rule. क्योंकि जब मेरा ही केस है और मैं ही जज हूं तो obviously I would be giving the decision in my side, right? Very good, Amit, Abhishek, right? The answer should be bias rule. आपको समझ में आ गया, आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया तो फिर फैक्ट्स को पढ़ करके आपको आंसर करना इजी हो गया. गुड कौस्तुभ. So moving on to the next question now. Mr. X is a public servant employed in a PSU, and Mrs. Y, who is the wife of Mr. X, is also an employee of the same PSU. Okay, so Mr. X and Mrs. Y both are husband and wife, and both are in the same PSU. PSU पता है आप लोगों को ना, Public Service Undertaking. It is a like ONGC, Maharatna companies. These are the PSUs office. So Miss A files a complaint against Mr. X for sexual harassment at workplace before the ICC. What is ICC? The Internal Complaints Committee, which is headed by Mrs. Y. Mrs. Y कौन हो गई? Mrs. X, Mr. X की wife, right? So after completing her inquiry, she held that Mr. X is guilty. ठीक है, अपने husband को guilty बता दिया उन्होंने. चलो अच्छी बात है. And recommended disciplinary proceedings against him. Very nice. So now on what grounds Mr. X may challenge her findings? जो Mr. X हैं, on what grounds will he challenge the findings? So the options are Mrs. A, Mrs. Y is an employee of the same institution and the inquiry should have been conducted by a person outside the institution. The complaint was filed by a female employee, so the inquiry must have been conducted by a male employee. Mrs. Y is the wife of Mr. X and she holds a personal bias in the case. So the inquiry, wait just a second. So the inquiry should not have been conducted by her, and Mr. X, being the accused, should have conducted the inquiry himself. So which should be the option? Come on guys, answer. I hope you understood the question. C. Okay, Mayank. Other people? जल्दी answer करिए, जल्दी. Good. C. Why C? Because bias rule लगेगा यहाँ पे. She is the wife. Wife is related. ठीक है? No one can be a judge in his own cause. है ना? Bias rule लग जाएगा. That's why it should be C. C should be the correct answer in here. Bias rule. All right. Easy है solve करना. Accuracy rate बढ़ेगी आप लोगों की? बढ़ेगी कि नहीं? जल्दी बताइए. All right, moving on to the next question. Do answer my question. Your accuracy rate should increase. Good. So, moving on to the third question. Mr. A is a judge and he is also the landlord. So, judge भी है Mr. A. Judge मतलब court में. And also the landlord of Mr. B. मतलब कि Mr. B के मकान के मालिक हैं.
who resides in an apartment owned by Mr. A. Due to non-payment of rent for 3 consecutive months, Mr. A served an eviction notice. Eviction मतलब पता है सबको? Eviction notice मतलब मेरा जो घर है उसको छोड़ के जाइए, वापस निकलिए यहाँ से, 3 महीने से रेंट नहीं भरा आपने. So Mr. A served an eviction notice to Mr. B. Now choose the most appropriate option amongst the following. Okay, I hope the options are visible. Please read and answer it to me. Otherwise, I'll just read it to you. A is being a judge himself. Mr. A cannot issue such notice of eviction. B, Mr. A can issue such notice because it is his duty as a judge, apart from being a landlord. C, such notice is illegal as Mr. B was not given an opportunity to present his case. And D, Mr. A issued such notice in his personal capacity as a landlord and not being a judge. What should be the answer? Okay, Rashi is saying D, Rohit saying D. No, Rohit saying A, Rashi is saying D, Mansi D. Hello, Marcus. Mayank is saying D. Okay. Moving on. Now see. First option पहले देखेंगे हम लोग. First option क्या है? Being a judge himself, Mr. A cannot issue such notice of eviction. ये भी एक तरह से सही है, right? पर उसके पहले हम क्या करेंगे? बाकी सारे options भी देखेंगे. Because ये सही है क्योंकि आप उसको inference लगा रहे हैं कि वो जज है तो उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लैंडलॉर्ड भी है. पर ये लैंडलॉर्ड भी है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, तो आप बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. बट डी में क्या दिया हुआ है? ओके, फर्स्ट लेट्स सी. मिस्टर ए कैन इश्यू सच नोटिस बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी एज अ जज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लैंडलॉर्ड. मिस्टर ए कैन इश्यू सच नोटिस. यस, ही कैन इश्यू एज अ जज, बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड है तो बायस रूल लग रहा है. ठीक है, तो फिर नहीं कर सकता यहाँ पे. अगेन, सच नोटिस इज इलीगल एज मिस्टर बी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस. ये भी सही है, बट पूरी तरह से सही है नहीं. सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? ये मिस्टर ए इशूड सच नोटिस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ लैंडलॉर्ड एंड नॉट बीइंग अ जज, है ना? क्योंकि ही सेंड द एविक्शन नोटिस बिकॉज वो रेंट नहीं दे रहा था उसको 3 महीने से. वो परेशान हो गया, भाई रेंट नहीं मिल रहा है, फ्री फोकट का रह रहा है. तो वो अपने लैंडलॉर्ड के अपने कैपेसिटी में ही गेव दैट नोटिस, नॉट एज अ जज. Okay, so the answer should be D. D is the most appropriate. So try every time. ठीक है, I have also given CLAT and मेरे साथ भी ऐसे silly mistakes हुए हैं क्योंकि हड़बड़ी रहती है, टाइम कम रहता है, तो कई बार मैंने भी, क्योंकि होता है 2-3 ऑप्शन होंगे तो थोड़े क्लोज रहेंगे इसमें. ठीक है, एंड हड़बड़ी में आप सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको पहले ऑप्शन सही लगा, आपने टिक लगा दिया. तो ट्राई कि आप लीगल रीजनिंग में स्पेशली थोड़ा आप टाइम देकर के चारों ऑप्शन पढ़ लें. आपको सही लग रहा है फर्स्ट वाला भी, तो भी चारों ऑप्शन एक बार देखें जरूर आप. ठीक है, ओके, में से ऑल राइट, डन. होप यू अंडरस्टूड दिस वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. which of the following is not in violation of the principles of natural justice? Withholding of an increment of a public servant without giving him an opportunity to defend. Non-renewal of a contract of employment of an employee after the period of a contract is over. Initiating a departmental inquiry against a public servant without giving him an opportunity to submit representation during such inquiry. Or D, all of the above. What should be the answer? Come on guys, आपका समय शुरू होता है अब. चलिए जल्दी आंसर कीजिए. मयंक ने कहा है C. ओके, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए. अर्नव कह रहे हैं डी. ओके, नॉट इन वायलेशन. ठीक है, ऑलवेज नोटिस द कीवर्ड्स. यहाँ पे कीवर्ड क्या है? द कीवर्ड इज नॉट. नॉट इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. बताइए. डी. ओके, सो यू गाइस आर सेइंग कि ऑल ऑफ दीज आर नॉट इन वायलेशन. ओके, okay, not in violation. Okay, so I'll start explaining. Number 1, withholding of an increment of a public servant without giving him an opportunity to defend. Not in violation of principles of natural justice. ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी जगह पे, okay, Marcus says A. Okay, not in violation of,
आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई रीजन नहीं दिया कि आपका इंक्रीमेंट मतलब कि इंक्रीज जो हो रहा है आपका पेमेंट, आपको कोई रीजन नहीं दिया, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने कह दिया कि आपको हम अब आपका पे इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, आर्बिट्रेरीली, राइट, आपको बता ही नहीं रहे क्यों, आपको बात करने का मौका भी नहीं दिया, आपको बस बोल दिया आपको पे इंक्रीज नहीं करेंगे. विल इट बी गुड फॉर यू? डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल कि मुझे बिना बताए मेरा पे इंक्रीज रोक दिया? डू यू थिंक दिस इज नॉट इन वायलेशन, or is it in violation of principle of natural justice? And which one? The hearing rule. The first was hearing rule, right? क्या था कि मेरे से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए मेरे को डिफेंड करने के लिए, है ना? तो इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, कीवर्ड यहाँ पे हो गया विदाउट, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे डिफेंड करने के लिए, तो गलत हो गया, ये वायलेट हो रहा है ना मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हो रहा है ना? हाँ, जल्दी जवाब दीजिए, समझ आया आप लोगों को? कम ऑन गाइस, वेटिंग. यस, गुड. यहाँ पे मेरा हो रहा है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा इंक्रीज करने वाले हम सैलरी, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता रही हूँ, या फिर आप बोल दिया सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं नहीं कर रहे हैं. भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको बता तो दीजिए कम से कम, ठीक है, दैट इज माई नेचुरल राइट. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि सबका एक नेचुरल राइट है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा, मेरे वायलेशन हो रहा है, ठीक है, एंड प्लस इट इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगेन पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट में तो ऐसे लोग कर सकते हैं बिकॉज, बट दिस इज अ पब्लिक सर्वेंट, दैट मीन्स अ गवर्नमेंट जॉब, without giving me an opportunity to defend, they cannot do, okay, because hearing rule, the first जो principle था hearing rule, that is being violated here, okay. Moving on to the second one, hope everybody is clear with this. Non-renewal of a contract of employment of an employee after the period of contract is over, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए, अच्छा आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा, मेरे टाइम पे था, मुझे अभी का पता नहीं है. There was an institute called IISC, okay, Indian Institute of Science and Technology, I think. So you give this IIT JEE exam and you give this IIST या कुछ ऐसे करके एग्जाम होता था उसका, and वहां पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया, they will give you a stipend to study. You have to pay nothing. They'll give you a stipend every month. You just study there. But after the study is over, आपको 5 साल इसरो में काम करना है, ठीक है, इसरो में आपको 5 साल काम करना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो अब 5 साल आपने काम कर लिया, तो 5 साल के बाद उन्हें मन किया नहीं इंक्रीज करने का, तो उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो फिर नहीं बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसके बाद तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बना था, उन्होंने नहीं उनको मन किया बढ़ाने का, नहीं किया उन्होंने, ठीक है. तो इसमें तो मेरा कोई जस्टिस, तो मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आई डोंट थिंक कि वायलेट हो रहा है, राइट, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट वाज ओनली फॉर 5 इयर्स ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो मुझे हटा देते तो भले ही मेरा वायलेट होता मेरा नेचुरल जस्टिस, बट 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको रिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है. तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. डू यू थिंक दिस इज वायलेटिंग? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए गाइस, समझ में आ रहा है तो प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव. I hope you understood this, what I mean to say. After the period of contract is over. Oh, another good example that I have. आपने CLAT गुरुकुल में 1 year का कोचिंग आप ले रहे हैं, ठीक है. So 1 year का कोचिंग है, right? Afterwards, you get into an NLU. Your contract gets over, you get into an NLU, है ना. फिर आप दोबारा तो आप उसको renew नहीं करेंगे. But some people might be who are in 11th, so after a year they might renew it, or maybe 2 year का है जिनका, so they might renew it again, है ना. तो आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कोई आपका वायलेट तो हो नहीं रहा कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. आई होप दिस इज मोर क्लियर, मोर कनेक्टेड टू योर, so hopefully you understood this. Again, moving on to the next one, initiating a departmental inquiry against a public servant without giving him an opportunity to submit representation during such inquiry. I think there are many cases related to this departmental inquiry, और
This is clearly in violation. Why? Because again, the keyword is without giving him an opportunity to submit representation during such inquiry. डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट हो रही है और मुझे आप रिप्रेजेंट करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं. एंड अगेन पब्लिक सर्वेंट है ना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, गवर्नमेंट सर्विस. तो द पर्सन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अगेन इट इज गेटिंग वायलेटेड. हो रहा ना वायलेट, और यहाँ पूछा है नॉट इन वायलेशन, और यहाँ पे हो रहा है वायलेट. जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग सब चुप हो गए हैं. नहीं समझ आ रहा तो पूछिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. कम ऑन गाइस, डर गए? नहीं समझ आ रहा है, क्या हुआ? राशि, रोहित, अमित, मानसी, वेर आर यू गाइस? यस, द आंसर इज बी, because the question is asking not in violation. I hope everybody understood the difference. Answer me. You guys understood, right? Moving on to the next question, the last question. Question number 5. On the basis of your understanding about natural justice in the passage above, state which of the following is true. Tell me, which of the following is true? Very good, Indrajit, Mansi, Mayank, may say. Rashi, very good. You answered that correctly. Hopefully, you guys understood why D was not correct and why A was not correct. Now, read this and answer this. I'll just read the options. Adherence to the reasoned decision rule is not required if other two rules are complied with. Compliance of bias rule itself rejects the need of the hearing and the reasoned decision rule. Principle of natural justice is incomplete without the compliance of any of its rules. And D, the reasoned decision rule is a substitute for the bias rule. Answer this. Come on, guys. Answer the 5th one. And please mention 5. Okay? Mention 5 in front of the option because earlier the options were B. So, come on, start answering fast. Is it a bit difficult? Okay. C. Rashi is saying C. Okay, other people, come on. Answer fast. What do you guys think? Is Rashi correct? Is Rashi correct? Rohit is saying C. Okay. And other people? Indrajit, Mansi, Mayank is saying D. Maysay is saying C. All right. Let's see. Adherence to the reasoned decision rule is not required if other two rules are complied with. ठीक है, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ये तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है. ओके अमित, कि adherence to the reasoned decision rule is not required if other two rules are complied with. कहीं पे और वाला सिस्टम तो था नहीं, है ना, और एंड ये सब कुछ था नहीं, बस 3 रूल्स थे. तो आई डोंट थिंक दिस वन इज राइट. Secondly, compliance of bias rule itself rejects the need of hearing and reasoned decision rule. Why would bias rule reject the need of the hearing and reasoned decision rule? All 3 are different, है ना, different cases में different apply हो रहे हैं. Third is principle of natural justice is incomplete without the compliance of any of its rules. This is right. Why is it right? क्योंकि 3 रूल्स हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी एक रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनकम्प्लीट है, राइट? सो दिस इज करेक्ट. देन अगेन, रीजन डिसीजन रूल इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बायस रूल. पैसेज में ऐसा कहीं दिया नहीं था कि अगर बायस रीजन डिसीजन रूल है तो फिर बायस रूल का सब्स्टिट्यूट है, ये भी कहीं पे मेंशन नहीं था. दे आर सेपरेट रूल्स, राइट, सेपरेट प्रिंसिपल्स. सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. सो द करेक्ट वन इज C, principle of natural justice incomplete without the compliance of any of its rules. ठीक है, always try कि आपने जो पैसेज पढ़ा है उससे, उसमें जो चीज, जो फैक्ट जो नहीं दिया हुआ है, आप उसको भी, मतलब उसको आप ना, उस कुछ भी आप नया फैक्ट ऐड करके अपने आंसर स्टिक ना करें. जो उसमें जो मेंशन्ड है
ये mentioned है principle of natural justice is incomplete without the compliance of any of its rules. It is mentioned that it contains 3 rules, and it is I think if you see it is sort of mentioned there. Let's see. It has different colors and shades which vary from the context. Basically, natural justice consists of 3 rules, right? So it is mentioned over here. So I think the third option is correct. Okay, guys? I hope nobody has any doubt. Now, what I would like to say is, so ending it here, because obviously the time is also quite a lot, 45 minutes already. So what I want to ask you guys is, did you like this previous year mock and like question analysis? Was it helpful to you in any way? Did you get an idea of how the question is going to be? And do you think कि अगर ये analysis आपको help करेगा और आपका थोड़ा जो डर है अंदर का वो खत्म हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डील किया लीगल रीजनिंग का, if you want me to bring another video which relates to previous year question analysis of legal reasoning, and even if you want other sections previous year question analysis, please let me know. Just give a comment that you want another video related to this. We will do that. If not, you can also give suggestions on what video you want. Why am I asking? Because this is the last time, 12 days remaining, everybody would be busy in self-studying. So we want to bring the videos which is helpful to you at this point of time. Okay? So if you think that this one is helpful, previous year question analysis is going to help you. Obviously, it's going to help you in knowing the questions that are going to come in the next 2021 CLAT, right? So if you think that this will help you a little, and in also checking where you are right now, okay, because if you are able to answer these questions correctly, even if 4 out of 5 are correct, then you know that you are at a good place. Just a little bit more of practice and you are going to get into the top NLUs, right? So please let me know. Okay, Rashi, related to family laws. Okay, Mansi. So Rashi, just related to family laws or the whole previous year question analysis of all the legal reasoning, because सारे ही है उसमें, not just related to family law, there are even environmental law is there, all kind of laws are there. So if you want that, okay, just let me know that. And then again, some Guru Gyan now. So the Guru Gyan begins with keep solving mocks and PYQs if you can. Okay, you might say that सिर्फ 2020 का PYQ है, नहीं, बाकी भी है प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू. अभी क्या है, छुपा दिया बस, अभी डिटेक्टिव बनना है आपको, ठीक है, पैसेज में से ढूंढना है आपको डिटेक्टिव की तरह कि कहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, कहाँ से निकालना है, राइट? बट previous year questions are also going to be helpful, and keep solving mocks. Okay, and if we are on the topic of mocks, CLAT Gurukul ka mock, second All India mock is releasing today. It has already released, I believe. So go ahead and solve that and see where you're standing. Okay? Again, wow, it was helpful. Thank you so much. 100% yes. Grateful to you guys. Okay, basic legal information and family law and patent as well. All right. What I'm going to do is, the next video of mine would be related to previous year question analysis of this only, the previous year question analysis. And then afterwards, what we will do is, we will deal with a few questions which would be related to family law and patent as well, which would not be there in the last year question, 2020 question mein jo bhi nahi hoga. We will deal with that as well. Okay, Rashi? And okay, guys, I hope this will help. Again, keep solving mocks and keep solving mocks today, not tomorrow. कल कभी नहीं आता है, पता है ना आप लोगों को, हर दिन आज होता है, अभी. This is the moment. The next moment is going to come and the previous moment is already gone. So present. अभी जो भी आपको करना है अभी कीजिए, कल पे कुछ मत डालिए, ठीक है? So do that again. Some motivation. I will study and I will win. Just अपने आप को आप हमेशा बताते रहिए, ठीक है? इसको लिख लीजिए कहीं पर and post it to your mirror or whatever, that you're going to study and you're going to win. You're going to clear CLAT. It's a beautiful day to go after your dreams. And if your dream is the top NLUs,
then go after it. Just come on, just keep on practicing, keep on studying, and keep on taking care of yourself. ठीक है? COVID is going on all around. थर्ड वेव का भी बात हो रहा है, तो प्लीज अपने आप को सेफ रखिए, घर पे जितना हो पाए रहिए, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, साथ में अपना ख्याल रखिए, 8 घंटे जरूर सोइए, ठीक है, शेड्यूल थोड़ा सुधार लीजिए ताकि 2 से 4 बजे नींद ना आए आपको, एग्जाम हॉल में नींद नहीं आनी चाहिए, दोपहर में आप कोई भी नहीं सोएगा, ठीक है? Okay, Rashi, all the best for tomorrow's CLAT. Okay, moving on. Ending with a famous quote that I follow. This is my favorite quote, and I always try to adhere by it, which is, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, ठीक है, और हर पल क्यों सोचे कि बुरा होगा, बस बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। मतलब कि डरना नहीं है कि क्या होगा, इस बार क्लैट नहीं निकला, क्या हुआ। सी, यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड वेरेवर यू गो, दैट इज द राइट वे, दैट इज द राइट पाथ, जस्ट कीप ऑन गोइंग, ठीक है। कुछ हुआ कुछ ना हुआ सोचे क्या फायदा, आप बस जाइए अपने सही रास्ते पे, आप बस चलते रहिए, कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस, you'll get experience, ठीक है, if nothing you're gaining experience, all right, so keep that in mind, stop thinking क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें देना होगा जब देंगे, अपना कर्म करते जाइए, ठीक है। So guys, keep on doing that. All right, hopefully this session was very helpful, and we will bring more PYQ analysis in the next session as well, and I hope it will be helpful. All right guys, so see you guys in the next session. I hope all your doubts are cleared. No doubts, no questions anymore, right? Okay, thank you Mansi, thank you Rashi, thank you guys. See you in the next session. Take care, stay safe, and keep studying, keep practicing. Okay? Thank you, thank you. All right, we'll end it here and see you guys in the next session. And please do like this video and comment also on the video, and please share it as much as you can. And if you haven't subscribed, please subscribe as well. Share it with your friends, your family, bhai behan, cousins, jinke liye bhi ye helpful ho. Please share it. Okay? Okay guys, very nice Amit, thank you so much. Thank you Rashi, you also take care, and all the best for all the best to all of you who are giving CLAT tomorrow, and hopefully you all are gonna rock, that is I'm sure. And yes, please guys, like, share and subscribe. Okay, ending it here, see you guys in the next session. Okay, bye bye, take care.